अक्षिता, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। Sir, my name is Akshita Dhiman and I belong to Dharamshala, that is in Himachal Pradesh. And I did my 12th from Army Public School, Dharamshala, and I did my graduation from Government Degree College, Dharamshala, that is affiliated from HP University. And I pursued my MBA in Finance from Central University of Himachal Pradesh. Then recently, I have completed my 1-year apprenticeship program from SJVN Limited. That was an hydroelectric project limited. And my hobbies are singing. I love to do cooking. I love to talk to elderly people. My strength, I am disciplined. I'm well mannered. I am an honest person. And my weakness that I trust too much on people and I lack diplomacy, and that's it by myself. अक्षिता, हाँ जी क्या मतलब है आपके नाम का? सर, इसका इंग्लिश में मुझे मतलब पता है, वो बता सकते हो? बताइए। सर, it's called something is limitless, beyond limits. बियॉन्ड लिमिट्स मतलब उसके आगे कुछ कोई सेंस? A wonderful child or something. तो आप मतलब आपको सूट करता है एक्चुअल में ये नाम आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से? Yes sir. कैसे? क्योंकि सर लिमिट्स की बात आ रही है सर, कई बार ऐसा होता है कि कई बार मुझे अपनी इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल करना पड़ जाता है लिमिटेशंस के बियॉन्ड में। मतलब इंसिडेंट शेयर कर सकती हूँ, जैसे कि सर अभी मैंने थोड़े दिन पहले 20 दिन पहले सर मतलब अपने नेबर को 2000 रुपीज बोरो करे थे, उसको दिए थे, उसने बोरो किए थे मेरे से। तो फिर 20 डेज हो गए, अभी तक मैं उससे मांग नहीं पा रही हूँ खुद के पैसे। तो सर मांगती भी हो तो सर ऐसे लगता है कि उसको हर्ट हो जाएगा, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने में। आप धर्मशाला से बिलोंग करते हैं? हाँ जी सर। तो धर्मशाला का क्या महत्व है हिमाचल प्रदेश में? सर धर्मशाला जो वन ऑफ द स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, सर ये हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल भी है। और सर जो धर्मशाला है, यहाँ पे बहुत सारे आप फ्लोरा फौना देख सकते हो, देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे, और सर धौलाधार रेंजेस यहाँ पे हैं। और सर यहाँ पे तिब्बतन एग्जाइल रह रहे हैं अभी भी। और सर यहाँ पे सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना कॉलेज है धर्मशाला कॉलेज, जो अंग्रेजों के अच्छा, जमाने। तिब्बत के बारे में आपको कुछ पता है? तिब्बत का क्या इशू है, कुछ उसके बारे में कोई नॉलेज है आपको? यस सर 1959 में सर तिब्बतन एग्जाइल यहाँ पे हुआ था। उससे पहले मसूरी में रह रहे थे, पर डिसाइड किया गया कि 1961 क्यों में। हुआ था ये, क्यों आए थे यहाँ पे लोग ये? सर चाइनीज गवर्नमेंट ने वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था तिब्बत में। ओके। फिर तो अभी जो ये सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं इनके, हाँ जी, तिब्बत के दलाई सबसे लामा। बड़े जो धार्मिक गुरु हैं, क्या नाम है उनका? सर तेंजिन ग्यात्सो। और दलाई लामा के बारे में जानते हो कुछ? हाँ जी, ये 14th दलाई लामा है, तेंजिन ग्यात्सो। ये धर्म गुरु हैं तिब्बतन्स के, बौद्ध धर्म के। और सर इन्होंने काल चक्रा जो ट्रेनिंग होती है इनकी, उसमें उन्होंने महारत हासिल की है। ओके। अच्छा, पेंडो डैम कहाँ पे है ये बताओ, किस रिवर पे है? पंडोर डैम सर सर ये ब्यास रिवर पे है। और ब्यास रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? सर ब्यास रिवर सर ब्यास कुल्लू से निकलती है, और सर ये होके जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट से सर वहां तक पता है मुझे। आगे कहाँ जाती है? सर पाक इंडस ट्रिब्यूटरी है ये, वन ऑफ द इंडस रिवर से मिल जाती है।
इंडस से कहाँ जाके मिलती है? उससे पहले भी तो कहीं फ्लो करती है। इंडस से सर जम्मू कश्मीर से जाके मिलती है, हाँ जम्मू जी कश्मीर के थ्रू जाती है या उत्तर प्रदेश से जाती है, कहाँ से सर, जाती जम्मू है? सर नॉर्थ साइड से जाती है, जम्मू कश्मीर। ओके। ओके। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक जगह को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, हाँ जी सर। कौन सी जगह है वो? सर खजियार। हिमाचल प्रदेश में एक 84 टेम्पल्स है, एक ग्रुप है एक जगह पे, वो कहाँ पे है? 84 धाम की बात कर रहे हो आप सर? सर हाँ, उसको बोलते हैं 84 टेम्पल का एक ग्रुप है वहां पे। इसके बारे में आइडिया नहीं है। छोटा काशी किसको बोलते हैं? नहीं यमुना रिवर हिमाचल से निकलती है कहीं से? सर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से टच होके जाती है हरियाणा में। ओके। अच्छा, आप एसजेवीएन में आपने काम किया है, कुछ टाइम इंटर्नशिप की है, राइट? हाँ जी तो सर। क्या क्या चीजें आपने वहां पे की हैं, बताइए। सर सबसे पहले तो सर बुक कीपिंग की है वहाँ पे, डायरी डिस्पैच किया है, और आईएम ड्राफ्टिंग की है, नोटिंग बनाई है, बीआरएस स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस पे काम किया सर, साथ में कार बिल्स चेक किए हैं सर। ओके। एक बात बताओ, एक रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो है, एक टर्म में बहुत ज्यादा यूज होती है वो, एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री में उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो। तो किस इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होती है ये टर्म? सर इसके बारे में पढ़ा नहीं है। एसजेवीएन में क्यों आना चाहते हो आप, ये बताओ। सर सबसे पहला कारण तो ये है सर, मैं 1 साल से यहीं पे ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मुझे लगता है ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे लगता है कि मैंने सीखा कि मैं अपने करियर की शुरुआत यहाँ से कर सकती हूँ, और ये ग्रोइंग स्टेज पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, और अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी नर्चरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है सर। आपकी जो भी यात्रा रही एसजेवीएन के साथ, उसमें कोई ऐसा मोमेंट जब आपको डिमोटिवेटेड फील हुआ हो, आपको लगा हो कि मैं यहाँ पे क्यों आ गई? हाँ हाँ जी सर। सर दूसरे महीने में थोड़ा सा लगा था, क्योंकि जो अप्रेंटिसेस होते हैं सर, उनको इतना काम नहीं सिखाया जाता, पर फिर भी जो वहाँ के सहयोगी एम्प्लॉयज थे, उन्होंने मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। बाद में ये मैंने क्यों उनसे बात भी की। लगा, हाँ जी सर। डिमोटिवेटेड क्यों फील हुआ आपको? सर जैसे उनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सैप वगैरह, तो उन पे वो काम नहीं करवा पा रहे थे मुझे, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज के उसमें आ रहा था। तो मैं तो यही सोच के आई थी कि मैं कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे काम करूंगी। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं और क्या व्यू है आपका? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, सारे धर्मों के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, उससे रिलेटेड है ये। ओके, तो उसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कहीं पे उसके बारे में कुछ स्पेसिफाई किया गया है हमारे संविधान में? सो सेक्युलरिज्म और डाइवर्सिटी सर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात कही गई है कि नहीं? अभी तक उसका कोई जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है? नहीं कही गई है सर। कुछ नहीं कहा गया है। नहीं सर। तो ये आपके हिसाब से आना चाहिए इंडिया में या नहीं? सर आना चाहिए मेरे हिसाब से। लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस मांगी हैं लोगों से, आपने कोई रिकमेंडेशन भेजा अपना? सर 2 दिन पहले मुझे इसके बारे में किसी ने बताया, तो सर अभी तक तो मुझे वेबसाइट का नाम नहीं पता। अगर मैं भेजना चाहूँ तो सर मैं जरूर इसमें बोलूंगी कि इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि सर अभी भी हिमाचल में ऐसी बहुत सारी, लाहौल स्पीति में अभी भी ऐसी ट्राइब्स हैं सर, जहाँ पे
पॉलीगैमी जैसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो फिर सर उनको तो खत्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। वुमेन से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स आप रेज करना चाहेंगे जो यूसीसी में इंक्लूड होने चाहिए अभी आपके हिसाब से? वुमेन के लिए सर सर मैरिज जो रूल्स हैं, जैसे सर इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है तो सर। ओके सर, सुधीर सर। हाँ जी सर। Hi, Akshita. हाँ जी सर। Yeah, so where did you do your bachelor's and in which field was your bachelor's? So I did my bachelor in from Dharamshala College, and there was no field actually. That was in business administration. BBA. Yeah. Okay. So you have done an internship for 1 year, right? Yes, sir. Okay. So what was your role there as a finance intern? What are your responsibilities? Sir, are you talking about SJVN Limited? Yeah. Yeah, sir. I have worked in BRS to make BRS statements and IIM drafting and noting. I have checked car bills, and also I have worked on bookkeeping, and also I have worked on prepaid expenses statements. Like I have made those things. So how was the performance of share price of SJVN? Sir, currently it is rupees 40 rupees per share. So if you have to comment on how was its performance in the last 1 year? Sir, pardon, sir? How was the performance of the share in the last 1 year? If you have to comment on that. Sir, it is performing well because in last 2 years the share price was 39 or 38 rupees, or before that 35 rupees. So it is performing well. Okay. Which other states SJVN has projects? जी. Which are the other states where SJVN has got plants? Yeah, there is a plant in Gujarat. There is a plant in Buxar, and also in India. Are you talking about India? Yeah. Buxar, Bihar, and Maharashtra. And outside India? There is a plant. There is a joint venture with Nepal government and Bhutan. Okay. So who are the partners in SJVN? So the share capital is divided among three. That is 59.92% is holding share by central government of India, and 26% of share holding share by government of Himachal Pradesh, and 14% share is holding share is with general public, that is in stock market. Okay. And how familiar are you with the financial regulations and policies that are applicable to PSUs? I'm not familiar. Not aware? Not aware. So can you explain discounted cash flow model? DCF model? Not aware. Not aware? Not studied in your MBA? Sir, I've studied, but not remember. So can you name few financial ratios that are used to assess a company's performance? Sir, one is cash reserve ratio. Okay. Current ratio. Okay. Debt equity ratio.
And that's it. What do you mean by liquidity ratio? Liquidity? Yeah. The liquidity ratio is about liquid assets. How a Okay. company is sorry for the interruption. How a company is managing its liquid asset, and how it is able to convert it into a cash. Okay. What is the formula for liquidity ratio? Sir, total assets Okay. divided by current assets minus quick assets. I don't remember the formula. Okay. And how do you determine the cost of capital for a company? Cost of capital. Cost of capital. for a company. Yeah. Sir, it's a combination of shareholders' funds and long-term borrowings. Okay. Can you elaborate? Sir? Can you elaborate? How do you determine the cost of capital for a company? Sir, cost of capital means expenditure company has in last previous year. So cost to capital. Okay. What are the key financial statements? The cash flow statement. What are the key financial statements? Key financial statements. Yeah. Income statements. Okay. Cash flow statement. Yeah. Balance sheet. Okay. How are they related to each other? Sir, all of them define the company's revenues and income expenditures and performance of the company. Okay. So when you answered your weaknesses, right? Yes, You sir. told that you lack diplomacy. Yeah. And the position for which you are applying, right? You work in a corporate environment, although it's a PSU. Diplomacy is one of the key skills we look for candidates. Yes, sir. So how do you face when you have to, as a part of your job, you have to show some diplomacy when you face clients or when you face internal employees? So don't you think it's a disadvantage for you for this job? Sir, I'm working on that, sir. I know it is a disadvantage for me, but I'm working on it. I should not, but I think I should not display my that I lack this diplomacy in my weakness. That was a mistake. Okay. I'm working on that skill also. How are you working on it? Not a huge level, but on a personal level, I'm working on. Like yesterday, I asked, like मैंने अभी बताया उनको कि सर borrow किए थे rupees उन्होंने मेरे से तो. That's what I'm worried. No, for example, you cannot ask somebody whom you have given a loan of 2,000. You are not able to ask. In a company, there will be many responsibilities to follow up with debtors, right? To follow up and on the payments as a part of your job. So how are you going to do this? It's a big disadvantage, right? You Yeah, have sir. that problem of asking people what they owe you. So I'm working on that. It took time for me, but finally, yesterday I asked her. Finally, not directly, but yeah, in a diplomatic way, I asked her. Why not directly? It is your money, right? After all. But You're not there are. asking a loan yourself, right?
Yes, sir. We can't ask directly. We can't ask directly because there are in future events we need those people. We know we need loans for a company, so we can't ask directly. So in a diplomatic way, we can ask. Mhm. What is IRR? Internal rate of return. Yeah, can you explain? No. No. What is NPV? NPV. I don't remember. What is company's beta? I haven't studied about. Okay. So what you told your hobbies are singing, Yes. then Cooking cooking. Okay. and So can talking I to. call? So you have any special dishes which you are specialized in cooking? Yeah, there is a dish called in Himachal Pradesh madra, so I can make that. That's my favorite dish. Madura. What are the ingredients for that? For that we need there are different types of madra. So one of the type is aloo and chane, white chane madra. So we require aloo and chane, desi ghee, and dahi. And What is it? It's a curry or something? no, it's not a curry. It's a blend. It's a blend of like it is made from dahi, but it's not a curry because in curry we require a besan, not in madra. We require just haldi, dahi, and desi ghee. That's it. Okay. So what kind of music you like? So Bollywood, Old or new or what is this? both. Okay. So can you just sing for us? What is your best song so far which you can sing? So Your there is a favorite. song of Lata Mangeshkar ji Mhm. in वो कौन थी, Mhm. लग जा गले. It was written by Madan Mohan. Yeah. Sorry, composed by Madan Mohan sir. Mhm. So should I sing? Yeah, please. हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो कि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो कि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से. Thank you. Thank you. So Akshita, that's it from me. So my feedback to you is please don't mention your weaknesses unless asked for, right? They didn't, it's an introduction. You need not tell your weaknesses in your introduction at all. So you are starting on a very like a wrong note. They can take you off on that and then your interview can go very bad. So try to keep in your introduction so that it goes in a positive manner. Okay, So sir. never mention your weaknesses in your introduction unless they specifically ask you what are Okay, your sir. weaknesses, which there is only 5% chance of people asking you. Sir, can I ask you something? Yeah. Sir, is there a need to tell your weaknesses to other people? No, unless asked, why do you want to tell? Okay, sir. So there is no need. No need, right? In your when they ask you introduction, you just Okay, tell sir. about
your background, educational background you have covered, your work experience you are told, your hobbies you are told. Just stop there, right? Okay, sir. Because Okay, when sir. you say weaknesses, they start up your interview from there. Okay, sir. You can start off from there. Something which just can kick off from there, and it could go in a very negative direction, right? And it will upset your entire interview. So unless asked for, don't ever mention weaknesses of yours, right? That is one. Okay. The second, your knowledge about the company where you work for and your work experience is good, but you need to brush up your financials, pick up your corporate finance book, just Okay, go through it, because they might ask you, these are the basic questions which might be you need to answer, right? Capital asset pricing model, the reserve, the ratios, right? What is the relation between cash flow statement, P&L statement, balance sheet, right? Okay, so you need to brush up that. There you are lacking. So otherwise, it's good. Okay, your interview is good. Your body language is good. Communication skills are decent, but you are lacking in finance knowledge. So you just need to brush up your fundamentals. So you can get anywhere all these some 100 questions of about the most common questions asked in finance interviews, right? Okay, sir. So just brush that up, then take another mock, and you should be good, right? Thank you, sir. Tyagi, you are there? Yes, sir. Yeah. So Akshita, हाँ जी सर. थोड़ा सा अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है वहां पे. हाँ जी सर. एक तो तुमसे नाम का मतलब पूछ सकते हैं, बहुत बच्चों से पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सही तरीके से जवाब तैयार करो. अभी रेडी नहीं है तुम्हारा जवाब. Okay, sir. धर्मशाला से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली कोई ना कोई पूछेंगे. धर्मशाला का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ठीक है, टूरिस्ट के उसमें सिग्निफिकेंस सारा देख लो एक बार. ठीक है और सर. हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी फेमस जगह हैं. जैसे मिनी स्विट्जरलैंड तो तुमने बता दिया, लेकिन 84 टेम्पल भारमोर में है, छोटा काशी मंडी को बोलते हैं, ठीक है, ये सब. और कितने जिले हैं, कितनी लोकसभा हैं, कितनी विधानसभा हैं, ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें होती हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, थोड़ा इन सब चीजों के बारे में प्रिपेयर करो. ठीक है. हाँ. और जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत सारे वहां पे तुमसे रिलेटेड. टेक्निकल तो पूछ ही रहे हैं, साथ में प्योर जनरल क्वेश्चन, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना है. और तुम काम कर ही रही हो एसजेवीएन में, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे. हाँ जी सर. जो जो तुम काम कर रहे हो, तो उसको अच्छे तरीके से देख लो, क्या क्या तुमने लर्न किया है वहां पे. ठीक है सर. ठीक है. और आजकल यूसीसी के ऊपर पूरे इंडिया में डिबेट चल रही है, तो डेफिनेटली तुमसे उसके बारे में भी बात की जा सकती है. वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तुमसे बात की जा सकती है. ठीक है. ठीक है. तो इन इश्यूज को भी प्रिपेयर करो. और ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, तभी इसके ऊपर डिबेट हुई थी यूसीसी के ऊपर. तो उस टाइम फाइनलाइज नहीं किया गया था, लेकिन ये लिखा गया है उसमें कि भाई हमें स्टेट को आगे इस पे बढ़ना है, मतलब टाइम के साथ हमें यूसीसी लाने की दिशा में काम करना है. ये लिखा गया है उसमें, तो ये पता ओके. होना चाहिए तुम्हें. ठीक ठीक है. हाँ जी सर. चलो ठीक है. ओके, ऑल द बेस्ट. ठीक है सर.